Good morning, my dear students. Today we will start with the topic of relative velocity. In the last video, we had discussed about the vectors. So we had completed with the vectors, the dot product, the cross product of the vectors. I hope it's clear and you have also tried the numericals. Now in this video, we are going to discuss about relative velocity. Relative velocity phenomena. What is happening in relative velocity? Suppose you are traveling in a train. Okay, train number 1, and this train 1 is overtaken by another train 2 moving in the same direction. Okay, so there are two trains, train number 1 and 2, both are traveling in the same direction. So second train is overcoming the first train. Okay, what will you find? You will observe that the second train that is overcoming you is moving at a slower speed. Okay, is it clear? Now suppose if there are two trains that are moving in the same direction with the same velocity, in that case both the trains, the person who are looking from the window to the other person in the other train, they will continuously be in the same direction. So they don't feel that the other train is moving. Okay? And the third one, if the train is moving in the opposite direction, you must have observed while traveling in a train, when you find that the train is moving in the opposite direction, it appears that the speed of the second train is very very fast. बहुत तेजी से वो आपको क्रॉस करती चली जाती है, ऐसा लगता है कि सामने से आने वाली ट्रेन क्या थी, बहुत तेज थी. तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं relative velocity. So here we have two objects that are moving with velocity va and vv, and suppose the person A is looking at person B, then if they are moving in the same direction, then if vv is greater than va, then the speed with which it will move vv minus vva will be equal to vv minus va. अगर दो ट्रेन, दो ऑब्जेक्ट्स, दो कार्स एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी v और vv से चल रहे हैं और vv की वेलोसिटी va से ज़्यादा है, तभी v की वेलोसिटी क्या होगी, a से ज़्यादा है, तभी वो ओवरटेक कर पाएगी. लेकिन a में बैठा हुआ व्यक्ति को स्पीड क्या लगेगी, vv माइनस va, स्लो स्पीड. अगर दोनों की स्पीड बराबर है, दैट केस दोनों की स्पीड बराबर है तो वो दोनों एक साथ चलते रहेंगे. दोनों एक साथ, दो कार्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और दोनों की स्पीड अगर बराबर है, दोनों कंटिन्यूसली एक साथ चलती रहेंगी. उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. क्लियर? लेकिन अगर मान लो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, नाउ va and the other one is vv, then what you will find, their speeds add up. ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है va प्लस vv. ठीक है, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, va प्लस vv. सो द स्पीड अपीयर्स टू बी इंक्रीज. अब जो a में बैठा है उसको a की स्पीड बढ़ी हुई लगेगी और जो b में बैठा हुआ है उसको a की स्पीड बढ़ी हुई लगेगी. क्लियर? Let us take an example. Consider two objects A and B moving with uniform speeds VA and VV. So there are two objects A and B. They are moving with the uniform speed VA and VV. They are moving along the same direction x-axis, along the x-axis. Okay. Now at any instant, that is at initial position 0, time t equal to 0. तो उनका डिस्पोजिशन क्या है, पोजिशन कैसे दी जा रही है, 0 से. Initial position क्या है, x equal to 0. Okay, and after that it is moving with v velocity, so we will put the time, we will get the position of x. So this equation x at any instant t is given by the initial position x equal to 0 plus va t. Okay, similarly with reference to the frame, for the v velocity x की 0, इनिशियल क्या था 0 और उसकी v velocity से किसी भी
इंस्टेंट पर उसकी पोजीशन पता चल जाएगी. Now what we will do? We have to find out the relative displacement. क्या पता करना है? Relative displacement पता करना after the time t. We have to find out the relative displacement after the time t. So what we will do? We will x v t minus x a t कर दिया. तो सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बचा? v v minus v a t. तो ये क्या दे रहा है हमारा? Displacement, which is giving you the relative velocity of v with respect to a. Okay, it will give you the relative velocity of v with respect to a. Okay, अगर a में से b को घटा देंगे, then we will get the relative velocity of a with respect to b. Okay, so this equation is giving you relative velocity of v with respect to a, that is equal to vv minus va, and vab gives you the relative velocity of a with respect to v. Now we consider some special cases. For the first one, अगर a और b की velocity same है, if both are got the same velocity, then we have vv minus va equal to 0. तो vv minus va क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा if they were the same velocity. ठीक है? So if the two objects are moving in the same direction with the same speed, stay at constant distance. Okay? If two objects are moving in the same direction with the same speed, they will stay at a constant distance from each other. That means if we draw their graphs, then these displacement graphs will be parallel to each other. These will be parallel to each other. उनके बीच की दूरी हमेशा क्या बनी रहेगी? Constant बनी रहेगी. और वो दोनों हमेशा एक दूसरे से बराबरी दूरी पर रहेंगे. They will never meet each other. So these lines will be parallel to each other. The XA and XB will be parallel to each other, and their relative velocity will be equal to 0. So VV minus VA will be equal to 0. Then we have the second case. In second case, the relative velocity is not 0. The relative velocity is not 0. So we have the graph of displacement versus time. Okay, displacement versus time graph that will give you the velocity. So what do we find here? That the velocity of A is less than the velocity of B. Why? Because the slope of A is less than the slope of B. Because the slope of graph A is less than the slope of graph B. Therefore, the velocity of A is less than the velocity of B. So, VV minus VA will be positive. It means that VV minus VA, V will overtake the object, B will overtake the object A. Okay? So, we notice that मिलने से पहले क्या है? A की पोजीशन डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज़्यादा है B से. तो VV माइनस VA क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. और मिलने के बाद A वाला ग्राफ नीचे चला गया और B वाला ग्राफ ऊपर चला गया, तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. क्लियर? ग्राफ को देखते ही बता सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा है कि कम है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. कैसे? स्लोप से. B की स्लोप ज़्यादा है और A की स्लोप कम है. Then we have the next case. If the two objects are moving in opposite directions, then VA and VB are on the opposite side. As where two trains cross each other, they move in the opposite direction. In this case, the relative velocity is the sum of the two velocities, VA plus VB. VA plus VB. So, two trains are moving in the opposite direction, then the relative velocity is equal to VA plus VB. Okay. So the relative velocity is greater than the magnitude of individual velocity. VA plus VB will be greater than VA, also greater than velocity of VB. तो सामने से आने वाली ट्रेन हमेशा ज़्यादा स्पीड में दिखाई देगी. ठीक है? तो जो ट्रेन हमारे सामने से गुजरेगी उल्टी डायरेक्शन में, उसकी स्पीड हमेशा बढ़ी हुई दिखाई देगी. और अदरवाइज ऑल्सो, सपोज if the two trains are moving in the
opposite direction. Okay, so if two trains, let us take here it is VA. Okay, and the other train is in this direction VV, opposite. तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू VA माइनस VV। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम जब माइनस करेंगे तो क्या करेंगे हम? VA माइनस ऑफ माइनस VV। ठीक है, क्योंकि ये VV का डायरेक्शन क्या था? अपोजिट ऑफ A, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? VV, तो इसका हम नेगेटिव उल्टा कर देंगे, फिर से माइनस करेंगे, तो वी विल गेट VA प्लस VV। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई रोटेशन चलती है तो उनकी वेलोसिटीज जुड़ जाती है। Next we have relative velocities of two moving bodies inclined to each other. So earlier we had talked about two bodies that are moving either parallel to each other or anti-parallel to each other. Now we are going to discuss the relative velocity of two bodies that are at an angle to each other. Okay, so you can see here we have got two bodies VA and VV that are inclined to each other. To find out the relative velocity of the two bodies that are inclined to each other, we use the law of parallelogram of addition of vectors. What do we do? We use the parallelogram law of vectors of addition of two vectors. Okay, so we can apply this. We know that relative velocity is given by the formula VA minus VV. So what we will do? We will use law of parallelogram and we will add up these two, VA plus minus of VV. Okay, let us see that we have the velocity VA of an object moving in this direction with the velocity VA, another object moving horizontally in the direction VV. Okay, so we have to find out this relative velocity. What we will do? Relative velocity is given by formula VA minus VV. So what we will do? We will add up the reverse of velocity of V in the opposite direction and use the law of parallelogram. Okay, we will use the law of parallelogram. So here we have VA. Here we have VA moving along AP direction. Okay, and VV जो जा रहा था, इसमें हमें क्या करना है? We have to add this up. तो एडिशन करने के लिए हमने क्या किया? माइनस VV ले लिया और फिर इसको ऐड कर दिया। तो माइनस VV लेंगे, डायरेक्शन इज रिवर्स, so now direction is in the opposite direction, minus VV. Okay, and then we are completing the parallelogram. तो यहाँ पर VA और माइनस VV, V और VV के बीच में एंगल क्या था? थीटा। अपोजिट डायरेक्शन में जब माइनस VV हो गया तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 180 माइनस थीटा। Now we draw PR and QR and complete the parallelogram. Okay, so we get the resultant of VA minus VV is given by the diagonal AR. That AR will give you the relative velocity VA VV. Okay, so understand once again, we have got two objects that are moving at an angle theta to each other. VA और VV के बीच में एंगल थीटा है। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के क्या करना है? हमें उन दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस लेना, VA माइनस VV। तो हम VA माइनस VV करेंगे, जब एंगल है उनके बीच में तो हम उनका क्या यूज करेंगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या यूज करेंगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और तो उसके लिए एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस VV ब्रैकेट में ले लिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, फिर यूज करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले V और VB के बीच में क्या रिलेशन था? एंगल कितना था? थीटा। तो माइनस VB अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो माइनस VB का डायरेक्शन उल्टा हो गया, VA का इधर था, माइनस VB का इधर हो गया। Now we complete the parallelogram and the resultant of the parallelogram that is given by the diagonal AR, that is giving you the relative velocity VA VV. Okay. Now we will find out the relative velocity VA VV. Relative velocity resultant निकालने का फॉर्मूला क्या है? A square plus B square plus twice AB cos theta. So we use this formula to find out the resultant. VA equal to VA square plus VB square plus twice VA VB cos 180 minus theta. VB क्या ले लिया? माइनस का VB. Okay, VB कितना है? माइनस का VB. Okay,
So the resultant is VA square plus VB square minus twice VA VB cos theta, because from 180 minus theta is equal to minus cos theta. So we get minus 2A VA VB cos theta. So the resultant or the relative velocity VA VB is given by the formula VA square plus VB square minus twice VA VB cos theta. Then we have to find out the angle of the relative velocity. So the angle of the relative velocity is given by tan alpha modulus of minus VB sin 180 minus theta upon modulus of A plus modulus of minus VB cos 180 minus theta. That is equal to VB sin theta, VA minus VB cos theta. So what are we doing? This is nothing new. This is what we have studied in vectors law of parallelogram to find out the relative velocity that is given by the diagonal and the direction tan alpha, which is given by V sin theta upon A plus B cos theta. Now here there are again two cases. One, if the bodies A and B are moving with the velocities V and VB in parallel to each other, that is theta equal to 0. अगर यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू 0 रख देंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. ये क्या फॉर्मूला जाएगा VA प्लस VB माइनस 2A VB VA VB. तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या जाएगा VA माइनस VB का होल स्क्वायर, दैट इज VA माइनस VB. तो अगर थीटा 0 होगा तो VAB क्या होगा VA माइनस VB. ओके. और if they are moving in the opposite direction, then the VA VB will be VA plus VB. अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी VA माइनस VB. ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो VA प्लस VB. ओके. Next we start with the problem of rain and man. You all know when we move, the raindrop strikes our face. Okay. So we want to know at what we are moving with at a certain speed. Then the raindrops are striking at an angle to each other. Actually, the raindrops are falling vertically downward. But once we are moving with a speed, they appear to strike us at an angle theta. Okay. The greater the speed with which we are moving, the greater is the angle with which it is striking at our face. Okay. The angle is from the vertical. तो जितनी ज़्यादा तेजी से हम चलेंगे उतने ज़्यादा एंगल से वो हमारे पर टकराएंगी. ठीक है. ये एंगल कहाँ से होगा? वर्टिकल से होगा. So we will try to find out the relative velocity at which they will strike us, and the angle at which they will strike us. Okay. So when a man is in motion, the rain appears to be falling at an angle with the vertical. Greater is the velocity of the man, greater is the angle. This can be explained on the basis of relative velocity. So I have drawn a diagram here. The raindrop is falling vertical. Okay. The raindrop is falling vertical, and a person is moving at an angle of 90 degrees along the positive x-axis, that is represented by Vm. That is the velocity of the man moving in the positive m direction. Now we have to find out the relative velocity. So relative velocity is given by Vr minus Vm. Vr is the relative velocity of the rain. Vr क्या है? ये ऊपर से नीचे आ रहा Vr. और ये क्या है? This is the velocity of raindrops and this is the velocity of man. So अब अगर relative velocity निकालना है तो Vr minus Vm. Vr minus Vm के लिए क्या करेंगे? Vr plus opposite direction minus Vm. And then we use the law of parallelograms. Okay. तो हमने Vr को minus Vm कर दिया और ये Vr था, इसका law of parallelogram यूज किया and we have made a parallelogram ACBO or OACB. Now the relative velocity is given by the diagonal of the parallelogram ACBO. Relative velocity is given by the diagonal of the parallelogram ACBO, that is Vr.
Okay, so OC represents the resultant of VR and VM. Okay, now the angle between the man and the raindrop was 90 degree. So resultant का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, a square plus b square plus twice ab cos theta. यहाँ पर cos क्या हो गया 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0. So it is a square plus b square. So it is v square, v relative velocity क्या हो गई v r square plus vm square. Clear? Then we have to find out the angle at which this raindrop will strike the surface, strike the man. The angle tan theta. Here we will find out the tan theta. This is theta here. Tan theta क्या होगा, CB upon OB. CB upon OB. CB क्या था VM और OB क्या है VR. So CB upon OB. So this is equal to VM upon VR. So theta is equal to tan inverse VM upon VR. Tan theta is equal to VM upon VR. So theta is equal to tan inverse VM upon VR. Now here is the point. VM अगर VM बड़ा होगा, ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू भी बड़ी होगी. तो क्या हमें मालूम है कि tan 0 is 0 and tan 90 is infinity. जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है. तो यहाँ पर अगर VM की वैल्यू बढ़ेगी, अगर VM की वैल्यू बढ़ेगी तो थीटा भी बढ़ेगा. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर पर्सन जितनी ज्यादा स्पीड से चलेगा उतने ज्यादा एंगल पर वो हमारे उसके बूंदे आके टकराएंगी. ठीक है, दिस थीटा हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्टिकल. तो उतने ज्यादा एंगल से वो आके टकराएंगे, उतने ज्यादा वर्टिकल से इंक्लाइन होके वो उस पर्सन पर टकराएंगी. सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Vm upon VR. So greater is Vm, greater will be the angle theta. Next we have the problem of crossing a river by a swimmer. So we have a river here AB of width B, and a swimmer has to cross this river from A to B. Okay. Let the speed of swimmer be in still water. Swimmer swims with a speed v in still water, and u be the speed of the river flow of river. Okay, u is the speed of the flow of the river. Let the swimmer start swimming from the point A at an angle theta with the direction of the flow. The effective, that is the resultant velocities of the swimmer are u plus v cos theta along the flow. Flow की डायरेक्शन उसकी effective velocity क्या हो जाएगी u plus v cos theta, and perpendicular to the flow क्या हो जाएगी v sin theta. ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ. यहाँ पर this is क्या है, what is this? This is the river. ये A से B तक क्या है, रिवर है, रिवर जिसकी विड्थ क्या है v है. ठीक है, स्विमर जो यहाँ से चल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है v. इट इज फ्लोइंग एट एन एंगल थीटा टू द फ्लो ऑफ द करंट. करंट का क्या है u. करंट का फ्लो की स्पीड क्या है u. स्विमर की स्पीड क्या है v. along the flow of the current resultant velocity क्या है u plus v cos theta. Perpendicular to flow क्या है v sin theta. Okay, then we have got two cases. The first case we are going to discuss here. He has to cross the river in minimum time. To cross the river in minimum time. Okay, he has to cross the river in minimum time. So we need to calculate the time. Time क्या होता है, पूरी चौड़ाई क्रॉस करनी है, width divided by its velocity. Width क्या थी रिवर की v divided by the velocity perpendicular to the flow of river. So v divided by v sin theta. कितने टाइम में करनी है, मिनिमम टाइम में.
मिनिमम टाइम में करने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। v sin थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा होने के लिए sin थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट 1। तो sin थीटा शुड बी इक्वल टू 1, so theta should be equal to 90. Then minimum time is given by v upon v. Okay, minimum time is given by v upon v. Then something more is there. So to cross the river in minimum time, the swimmer must swim in the direction perpendicular to the flow of the current. That is, the swimmer should swim along AB. His velocity v should be along AB and not the resultant velocity AC. Resultant velocity क्या रही, AC. AC के along flow नहीं करना चाहिए. He should flow perpendicular to the current. So what you will find? अगर ऐसा होगा, he will swim along AB. If he will swim along AB, then also he will be dragged by the flow of the current to the point C. स्विम करना शुरू करेगा B की तरफ परपेंडिकुलर, लेकिन पहुंच क्या जाएगा C पर. पहुंचना कहाँ चाह रहा था वो, B पर, पहुंचेगा कहाँ, C पर. तो he will reach C. So we will find out BC, the distance at which it will point. B से परपेंडिकुलर से कहाँ पहुंच जाएगा, C पर. तो हम BC डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. तो BC डिस्टेंस किससे आएगा, velocity into time. Velocity along the flow of current क्या है, u plus v cos theta. Along the flow of direction of current क्या है, u plus v cos theta in time t. कितने टाइम में, t टाइम में. तो क्या हो जाएगा, u plus v cos 90 into t. cos 90 की वैल्यू 0. So it is ut. u क्या था, flow of the current. v और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ से, क्या है, v upon v. So we get the distance. तो डिस्टेंस किससे निकलेगा, uv upon v. तो bc डिस्टेंस कितना है, कहाँ पहुंच जाएगा, कितनी दूर पहुंच जाएगा, uv upon v. ठीक है. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी will be along AC. Resultant velocity will be along AC. It will be given by the formula root u square plus v square. Okay. Then we have the second case. To cross the river by covering minimum distance of swimming. So the distance between the two banks of the river is B. That is the minimum distance. So person should cover this distance, minimum distance. The resultant velocity should be 0. The resultant velocity along AB should be 0. Okay. And again, the resultant velocity of the swimmer and flow must be along AB. That is, along the direction of flow of current, along the direction of flow of the river, velocity should be 0. All velocity should be along AB. So we put that along the flow क्या थी velocity, u plus v cos theta. हमने u plus v cos theta को क्या रख दिया 0, क्योंकि इस तरफ डायरेक्शन क्या होना चाहिए, फ्लो का, स्विमर का 0 होना चाहिए. तो इस हमने cos theta की वैल्यू निकाली. cos theta क्या हो गया, माइनस u upon v. ठीक है, cos theta क्या आ गया, माइनस u upon v. Now we have to cross the river along AB. The swimmer should move along AB. Okay, must swim across angle theta with the direction of flow. तो resultant velocity along AB क्या हो गया, AB v sin theta. कितना है, AB का along direction क्या है, v sin theta. तो sin theta क्या होता है, √ 1 minus cos square theta. तो v sin theta की रख दिया v into 1 minus cos square theta. और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दी. cos थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस v upon u यहाँ पर रख दी. तो क्या आ गया, इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट टाइम. कितने टाइम में वो क्रॉस कर देगा. द टाइम इन विच अ पर्सन विल क्रॉस द रिवर इफ ही मूव्स ओनली dv डिस्टेंस. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड. मिनिमम डिस्टेंस क्या था, v divided by speed on root v square minus u square. So the time in which he will cross the river
v upon under root v square minus u square. In this case, the swimmer will reach the directly opposite point B on the other wing. इस केस में ही स्विमर कहाँ पहुंचेगा? ए से सीधा बी में पहुंचेगा. ये कब पॉसिबल है? एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना कब पॉसिबल है? जब उसका स्विमर का डायरेक्शन अलोंग द रिवर जीरो है, या टोटल वेलोसिटी अलोंग द फ्लो ऑफ करंट u प्लस v cos थीटा इज जीरो, और he is swimming in a still water में स्विम कर रहा है. ओके, फ्रॉम दिस रिलेशन हमारे पास रिलेशन क्या है? b ओवर अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. v क्या था? वेलोसिटी ऑफ द स्विमर. u क्या था? फ्लो ऑफ करंट. लेकिन इस केस में क्या होना चाहिए? स्विमर की स्पीड हमेशा v स्क्वायर की वैल्यू u स्क्वायर से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव वैल्यूज क्या देती है? इमेजिनरी वैल्यूज. ठीक है, इसलिए v should always be greater than u, or u should always be less than v. Yeah, so that is all about the relative velocity. This is all about relative velocity. In the next video, we will be discussing projectile motion.